How many students are there? Shall we start? 104. Okay. So this is one of the problem which is given in Ruben chapter number 3 as a part of unsolved problem. And I always told you that how to attempt any unsolved problem or solved problem. First, we must read out the problem statement provided in a very clear manner. Each and every terminology and term is very, very important in problem statement, because the problem is designed in such a fashion that the solution is linked to the words and the data given. That is why I always suggest students to read the problem very clearly, very precisely. Whatever is given, every term, every parameter, every information, every assumptions, every laws, that small things are very, very important. So always focus on the problem statement. Let us read out it. A fluid of constant density rho. A fluid of constant density rho is pumped into a cone-shaped tank of total volume capital H pi capital R square upon 3. Okay. So we must be clear that whatever fluid is going to be pumped is having its density constant. At the cone-shaped tank must have the volume equal to capital H pi capital R square by 3. The total flow out of the bottom of the tank is proportional to the square root of the height h of the liquid in the tank. Okay, that is very important. So height of the liquid in the tank is referred as small h, and height of the cone shape tank is capital H. So both heights must be separately specified, and this should not be wrongly written. अदरवाइज लिक्विड की हाइट कोन की हो जाएंगी, कोन की हाइट लिक्विड की हो जाएंगी, तो उसमें मार्क्स कटने की संभावना ज्यादा है. The flow out of the bottom of the tank is proportional to the square root of the height h of liquid in the tank. Derive relation describing the system. एक बैच ही मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से 2015-16 की बैच थी. तो एक लड़के ने क्या किया, कोन की हाइट को लिक्विड की हाइट कर दिया और लिक्विड की हाइट को कोन की हाइट कर दिया, और फिगर दी हुई है, सारी चीजें दी हुई है. फिर जब उसके मार्क्स कट हो गए तो वो बोलने लगा कि सर वो तो क्या है कि सिर्फ तो हाइट का तो प्रॉब्लम है, कैपिटल और स्मॉल का तो इशू है. उसमें क्या होता है प्लीज कंसिडर कर लीजिए, हाइट तो हाइट ही होती है, बस यहाँ की वहां हो गई, वहां की यहाँ हो गई, तो आप ये वो पकड़ लीजिए और उसको इसको पकड़ लीजिए. तो फिर जो है, ऑफ कोर्स उसने डांट तो खाई होंगी और खाई थी, लेकिन इस तरीके के जो फिर हम लोग जस्टिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं हमारे मार्क्स को बचाने के लिए, because everybody is trying to save or trying at their level best to justify their writings, but one should not justify if suppose they made a mistake. This is a good sign of student. हाँ भाई, गलती हो गई, सर ने मार्क्स काटे. सर ने अगर मार्क्स काटे हैं तो वो मार्क्स मुझे आगे चल के
एक पॉजिटिव साबित होंगे कटे हुए मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैं आगे चल के ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। तो बोलने का मतलब ये है, इसके पीछे का एग्जांपल मैं फोकस इसलिए ये कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ चीजों पे, कि वॉट एवर पैरामीट्रिक इंफॉर्मेशन इज बीन असाइन एंड गिवन that are very important as far as problem statement is concerned and the figure is concerned. If it is said that assume your parameter as per your own and nothing parameter information is given to the system, and also told you to draw the sketch as per the problem statement, assume your parametric information and model the system. If suppose this is given, then the flexibility is there in your hand. Then you can state it, okay, and then nobody will cut your marks, because then marks cut will be there, or marks justification will be there towards the systematic and logical solution and logical modeling. If the modeling will be logical, then it's okay. The modeling, if it is not logical, then there will be issue, problem. So the reason behind this giving such examples is not to demoralize you, but to improve your enthu and moralize you, in writing such types of problems as far as this subject is concerned or any subject is concerned. किसी भी subject का ये आप example generalize ले सकते. Let us chalk down the assumptions which is given as per the problem statement. Assumptions क्या है हमारे जो problem statement में दिए हुए हैं? Fluid of constant density rho. Are you getting my point? Fluid जो है हमारा वो constant density का है. Total volume of a cone V is equal to capital H pi capital R square divided by 3. This is given. Flow out of the bottom of the tank, जो flow है bottom के बाहर का out of the tank is F is equal to K into square root of H. That means the flow out of the tank is directly proportional to the square root of its height of the liquid. Observing the figure, we can recall this particular phenomenon. If the two objects have same shape, they are called similar. When two figures are similar, the ratios of the lengths of their corresponding sides are equal. This is the principles of similarity of triangles.
So we can write small r upon capital R is equal to small h upon capital H. Okay. Therefore, we'll just find out R is equal to capital R into H upon capital R into small h upon capital H. And therefore, let us substitute this value of small r. Let us substitute this value of small r into this volume of the liquid present in the cone. So, VL is equal to स्मॉल h पाई r स्क्वायर की जगह पे आप ये वैल्यू डाल दीजिए r की, कैपिटल R h अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H. ओके, ये बन जाएगा स्मॉल h पाई अपॉन 3 इंटू कैपिटल R h अपॉन कैपिटल H ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल h क्यूब अपॉन 3 कैपिटल H स्क्वायर. Okay, so now we have modified the volume of the liquid present in the cone and we have used the principles of similarity of triangles, right? I think up to this particular stage everyone may have understand what is going on. Now, as you know, and by virtue of the observing of the of our figure, that some material is coming to the cone shaped tank. इसका मतलब ये हो गया कि some mass is flowing into the system, some mass is flowing out of the system is equal to time rate of change of mass inside the system, right? System का mass change हो रहा है. Okay, then अब इसमें डायनेमिक क्या होगा कि mass is changing into the system, मतलब थोड़ा बहुत जो height है वो कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो जाएगा. So the mass flowing into the system is equal to F0 rho minus F rho is equal to d dt of rho VL. Now, as density is constant, we will just nullify density from this equation of the total mass equation. We will write F0 minus F is equal to d dt of VL. Let us substitute the value of VL in this equation from the previous equation. Let us substitute the value of VL in this equation. We will get F0 minus F is equal to d dt of pi capital R square small h cube upon 3 capital H square. Are you getting my point? Now let's modify this. Let's modify this particular equation. F0 minus F is equal to pi capital R square upon 3 capital H square d dt of H cube. ये हम लोगों ने डेरिवेटिव टर्म के बाहर ले लिए. Why we have taken this parameters from the derivative term out of this derivative term? Because capital H जो हमारी टोटल कोन की हाइट है वो तो वेरी नहीं होगी, वो तो सेम होगी, कांस्टेंट रहेगी. जो रेडियस रहेगा, चाहे लिक्विड की हाइट थोड़ी ऊपर जाने दो थोड़ी नीचे जाने दो, रेडियस जो है वो सेम रहेगी. किसकी? अपनी. और जो पाई है वो भी कांस्टेंट रहेगा. सो F0 minus F is equal to pi capital R square upon 3 capital H square into 3 H square dH by dt. So taking derivative of this particular term, अगर आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया डी dt ऑफ h क्यूब का, तो ये डेरिवेटिव जो है ये फॉर्म ले लेगा 3h square dH by dt. I think everybody would have clearly understand what I am going to state. Now let us substitute for F. ये जो outflow है, the outflow of the liquid from the cone is directly proportional to the square root of the height of the liquid inside the cone, and associated with its proportionality constant K. So F0 minus K square root of H is equal to pi capital R square upon 3 capital H square into the same term 3 small h square dH by dt. So from that particular equation we are modified
and converted the equation into a simplest form. Let's discuss here. Okay, f0 minus k into square root of h is equal to, now just transfer all the terms to the right hand side. Okay, just slight modification. f0 minus k square root of h is equal to, ये सभी जो है इस साइड में हम लोगों ने इसको शिफ्ट कर दिया. ओके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल h स्क्वायर अपॉन कैपिटल h स्क्वायर डी बाय dt. ओके, therefore f0 is equal to, ये टर्म को उस साइड में शिफ्ट कर दीजिए आप, इस पर्टिकुलर टर्म को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद ये प्लस हो जाएगी. सो दिस पर्टिकुलर टर्म प्लस k square root of h. Okay, this is just a small modification done here. So dh by dt is equal to, so if you multiply this particular term left hand side and right hand side by the inverse of this term. Okay, if you multiply this equation, whole equation, by inverse of this term, inverse of this term means capital H square upon pi capital R square small h square से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड से और इस साइड से, तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा dh by dt प्लस k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ भी आ जाएगा, कैपिटल h स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर इज इक्वल टू f0 इंटू कैपिटल H स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल h स्क्वायर. Now dh by dt प्लस इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, रीअरेंजमेंट कर दिए इसको, कैपिटल एच स्क्वायर के अपॉन पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये जो एच है हाफ का और ये एच है. ओके, इनको मॉडिफाई कर दीजिए, दिस एच रेस टू हाफ माइनस टू, ये प्लस टू है ना तो इसको ऊपर लेके आइए माइनस टू इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म. नाउ दिस इज एच रेस टू, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये एच रेस टू हो जाएगा माइनस 3/2, तो इसको हम लोगों ने 1/h 3/2 कर लिया, dh by dt is equal to this. So from that equation we have described the equation into a dynamic form for the height of the liquid present in the cone, okay, in a systematic manner. And if you see this particular equation number 1, everything is defined, nothing is underdefined or undefined. Okay, only when we will be going to write a program of this particular, we have to state the values of some constant parametric information. Constant parameters की वैल्यू हम लोगों को प्रोग्राम जब आप लिखेंगे उसमें डालनी पड़ेगी और फिर जो है वो प्रोग्राम आपको ये दे देगा. अब ये इक्वेशन आपका फाइनल हो गया, dh by dt प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. सो इस इक्वेशन को आप देखेंगे, इट इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द इक्वेशन. नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल h, ये की हो गया आपका, एक ही वेरिएबल डिपेंडेंट है h, नंबर ऑफ इक्वेशन h एक हो गया. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका वेरिएबल माइनस इक्वेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 60 भी स्पेसिफिक. So I am hoping those who must have started this particular problem as a part of unsolved problem for solving, they must have attempted in a very systematic manner as per the solution discussed today. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग आज के दिन एक ही प्रॉब्लम लेंगे और एक प्रॉब्लम लेने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टॉप करेंगे और जो फर्दर हमारा प्रॉब्लम्स होंगे जो भी हम लोगों का कंटिन्यूशन में होगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब हम लोग वेडनेसडे को ये लोग हम लोग ले लेंगे. ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर. आई विल इनवाइट क्वेरी इफ एनी विल बी देयर. अगर कुछ क्वेरी होंगी आज के प्रॉब्लम के संदर्भ में तो आप मुझे चैट बॉक्स के संदर्भ में पूछ सकते हैं.
आई हैव ऑल्सो अनम्यूटेड यू पीपल्स, मैंने आपको अनम्यूट भी किया है। अगर आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो आप क्वेरी पूछिए, और अगर आपको चैट बॉक्स में डालनी है क्वेरी तो चैट बॉक्स में डालिए। आई एम होपिंग दैट एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड टुडेस प्रॉब्लम। आपको सभी को आज का प्रॉब्लम समझ में आया?